Hello everyone. So today our topic of discussion is preeclampsia. The pregnant women who develop or present with hypertension in pregnancy may be divided into gestational hypertension or chronic hypertension. So the International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy uses term gestational hypertension for all the women who have pregnancy-induced hypertension with or without proteinuria, as long as they had been previously normotensive and non-proteinuric. Once the proteinuria has developed, this is assumed to be preeclampsia. Now here comes the classification. So there are four main types. That is, first is gestational hypertension and or proteinuria developing during pregnancy, labor, or puerperium in a previously normotensive, non-proteinuric woman. So first is the gestational hypertension without proteinuria. Second is the gestational proteinuria without hypertension. Third is the gestational proteinuric hypertension, that is preeclampsia, because we know that in preeclampsia there is raised BP and there is proteinuria. Number two is the chronic hypertension, that is before weeks of 20 weeks and before 20 weeks of pregnancy. And second is the chronic renal disease, proteinuria before 20 weeks of pregnancy. So in this you have chronic hypertension without proteinuria, chronic renal disease, proteinuria with or without hypertension, and number three is chronic hypertension with superimposed preeclampsia, that is new onset proteinuria. Number three is the unclassified hypertension or proteinuria, and number last is the eclampsia, that is raised BP, proteinuria, and fits. The definitions, some basic definitions. Hypertension in pregnancy is described as diastolic more than 110 millimeter of mercury on any one occasion, or diastolic BP more than 90 millimeter of mercury on two or more consecutive occasions, more than 4 hours apart. And number two, the proteinuria in pregnancy, 124-hour urine protein, total protein excretion more than 300 milligram, or two clean catch midstream or calcifer specimen of urine collected more than 4 hours apart on 2 plus reagent strip, with 2 plus of reagent strip. So we categorize the hypertension into mild, moderate, and severe. So mild is the diastolic is from 90 to 99, and systolic blood pressure ranges from 140 to 149 millimeter of mercury. Moderate is diastolic blood pressure 100 to 109 millimeter of mercury, and systolic blood pressure is 150 to 159 millimeter of mercury. And severe is the blood pressure is more than 160 by 110. So preeclampsia. The definition of preeclampsia has 6 main points. That is the raised BP of at least 140 by 90 millimeter of mercury, recorded on at least 2 separate occasions and at least 4 hours apart, and in the presence of at least 300 milligram of protein in a 24-hour collection of urine, arising de novo after the 20th week of pregnancy in a previously normotensive woman and resolving completely by the 6th week postpartum. So it is a multi-system disorder. It involves the placenta, liver, kidneys, blood, neurological, and cardiovascular symptoms. And what are the diagnostic signs? There is hypertension and proteinuria. So incidence that occurs in less than 5% of an average international population, but in recent studies it has been as low as 2.2%, even in the primary gravitar population, in which the condition is known to have the highest prevalence. The incidence of non-proteinuric pregnancy-induced hypertension is approximately 3 times greater, and the preeclampsia in the women with a single risk factor is approximately 15%. So etiology. What happens in normal pregnancy is that there is first wave of trophoblastic invasion in the first trimester, and the spiral arteries they undergo series of physiological changes. You can see in the next slide here. There are series of changes, physiological changes, that they are invaded by the cytotrophoblast of the placenta, which breaks the endothelium, internal elastic lamina, and the muscular coat of the vessels. Every spiral artery in deciduous basalis will have undergone these changes by the end of the first trimester. And in the second trimester, second wave of trophoblast invasion occurs and transforms these myometrial segments of spiral arteries and occasionally distal segments of the radial artery. And these changes the muscular end arteries into the mouth-wide sinusoids. This second wave of invasion is completed by the second trimester. So actually what happens is this vascular supply is thus transformed from high pressure
low flow to low pressure, high flow system to meet the needs of fetus and placenta. But in preeclampsia, only one third to two third of one half to two third of deciduals and undergo these changes, and as a result, the invasion of trophoblast is partially impaired and second wave fails to occur. And this occurs by the 18 weeks. Actually, the second wave of trophoblast invasion completes by 18 weeks. So we describe preeclampsia occurs after 20 weeks because invasion as the तब तक cytotrophoblast invasion proper नहीं हुई. As a result, however, restricted blood flow had to the placenta, fetoplacental unit. You can see in this that their genetic predisposition, there's faulty interplay between the invading trophoblast and the residua. As a result, there's decreased blood flow to the fetoplacental unit, and there will be release of circulating factors and endothelial cell alteration under hypertension, proteinuria, and IUGR happen. So you can see in this diagram also that these are genetic factors, oxidative stress, abnormal trophoblast residual interaction, and increased antithrombin 3 autoantibodies. As a result of all these, there is defective deep placentation and failure of the transformation of biometrial segment of the spiral arteries. As a result, there is placental dysfunction, there will be oxidative and endoplasmic reticulum stress, pro-inflammatory cytokines will be released, increased AT3 autoantibodies, and there will be particulate matters of the sensory trophoblast. Now what happens is all these factors now will cause the increased anti-angiogenetic factors and will increase the angiogenetic factor. So this the placental hyperperfusion is also postulated to result in secretion of factors into maternal circulation that cause the activation of vascular endothelium. Endothelial cell activation explains the widespread manifest of the disease. As the vascular endothelium trophoblast regulate the remodeling of the spiral arteries and enable normal vasculogenesis through proangiogenic factors such as vascular endothelial growth factor and placental growth factor. Now, what happens in preeclampsia? That the variant of vascular endothelial growth factor that is soluble FMs like tyrosine kinase 1, SFLT, and it is upregulated in pregnancy with preeclampsia. It is known to antagonize the vascular endothelial growth factor and the placental growth factor. So, and endoglin ESENG, it is associated with preeclampsia as early as 15 weeks. Placental growth factor increases from first trimester, but less so in those destined to develop preeclampsia. While जो FM like tyrosine kinase 1 है, it will increase. So my markers of the endothelial damage are raised. Preeclampsia is associated with lipid changes and increase in lipid peroxidation, both in placenta and systemically, suggests that oxidative stress may be involved in endothelial changes. Now, as a result, there will be the manifestation of the features of preeclampsia, that is IUGR, acute fatty liver, pancreatitis, proteinuria, renal failure, hypertension, cardiac failure, pulmonary edema, seizures, hemolytic anemia. So this diagram also depicts the same etiology. That is, in stage 1, there is impaired representation and pseudovasculinogenesis. The NK cells, oxidative stress, genetic factors, they all are responsible for it. Let me make one thing very clear right now, that in NK cells, only HLA-C2 is responsible for the impaired presentation, and HLA-C1 है, it is actually involved in normal pregnancy. Normal presentation में, good presentation में NK cell का HLA-C1 जो है वो involved है, जबकि HLA-C2 it is involved in preeclampsia. अब ये सारे फैक्टर्स आ गए हैं, इन सब ने impaired pseudovasculogenesis की है. अब हमारे पास क्या होगा? As a result, clinical manifestation होगी preeclampsia की. कैसे? हमारे पास जो वो फैक्टर्स थे, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का जो हमारे पास वेरिएंट है वो ज्यादा हो गया, प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स कम हो गए और हमारे पास प्रीएक्लेम्पशिया के सिम्टम्स आ जाते हैं. ठीक है, अब आपके पास आ गया, हमने अभी डिस्कस किया कि जो प्रीएक्लेम्पशिया है it involves generally all the systems. So in renal system what happens is that there is a lesion called the glomeruloendotheliosis, and it is relatively specific for preeclampsia and is associated with impaired glomerular filtration and selective loss of intermediate weight proteins such as albumin transferring, leading to proteinuria. So this in turn causes a reduction in the plasma oncotic pressure and aggravates the development of edema. क्यों ऐसा होता है? जब हमें पता है कि जो हमारी वेसल्स हैं, they have protein, they retain the fluid then.
If there is less protein, the fluid will go into the extravascular space and will cause the formation of edema. You can see in the next slide here that the vessels have become more leaky, they have become more permeable, and the proteins, there are less proteins in the vessel, decrease oncotic pressure. Both these factors contribute to the development of the edema. Now coming on to our next slide, the cardiovascular system. And normally, pregnancy may there's marked peripheral vasodilation and resulting in total peripheral resistance fall होगी despite increase in plasma volume and cardiac rate. जो preeclampsia है, it is characterized by marked peripheral vasoconstriction resulting in hypertension. अब हमारे पास intravascular high pressure है, loss of endothelial cell integrity है, इससे क्या होगा, vascular permeability ज्यादा हो जाएगी and contributes to the formation of generalized edema. तो हेमाटोलॉजिकल सिस्टम, अब इवेंट्स एंडोथेलियल डैमेज में एंडोथेलियल डैमेज हो रही है, हमें पता है नॉर्मली जब डैमेज होती है तो प्लेटलेट्स दे अडहेयर टू दैट साइड, प्लेटलेट अडहेयर करते हैं, और डिफ्यूज वैस्कुलर डैमेज हो तो प्लेटलेट में फाइब्रिन डिपोजिशन भी होती है। अब ये हमारे पास क्या है प्रेक्लेम्शिया में, कि फाइब्रिन डिपोजिशन भी हो रही है और प्लेटलेट काउंट भी कम हो रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें, अब वो लिवर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एंडोथेलियल डिस्ट्रप्शन हुई, वहां पे प्लेटलेट्स का है, वहां पे फाइब्रिन डिपोजिशन हो गई है। तो जब इस तरह का एक थ्रोम्बाई बन गया है, यहाँ पे हेमोलिसिस हो रही है, लिवर एंजाइम जो है वो एलिवेट करना शुरू कर देंगे और ये सारी पिक्चर हेल्प सिंड्रोम की बन जाएगी। आपके पास हेमोलिसिस है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और प्लेटलेट काउंट कम हो गया, ठीक है, ये हेल्प सिंड्रोम है। इसमें मोर्टालिटी, फीटल मोर्टालिटी तो 60% है, और ये डिजीज सिवियर फॉर्म ऑफ प्री एक्लेम्शिया है, जस्ट 2 to 4% ऑफ वीमेन में होगी। पीपल जो औरतें हैं हेल्प सिंड्रोम के साथ ही कंप्लेन करेंगे, टिपिकली प्रेजेंट करती हैं एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, नॉसिया के साथ, वॉमिटिंग के साथ। एपिगैस्ट्रिक पेन क्यों कहती हैं, क्योंकि इनका जो लिवर है उसकी भी इंजरी हुई है, स्वेलिंग हो जाएगी, स्ट्रेच करेगा कैप्सूल, जब कैप्सूल स्ट्रेच करेगा तो फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन और एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आएंगी। अच्छा, हेल्प सिंड्रोम में हाइपरटेंशन हो भी सकती है, माइल्ड हो सकती है या एब्सेंट भी हो सकती है। हेल्प सिंड्रोम जो है ऑब्वियसली ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसमें एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है। तो हमने क्या करना है, मदर को स्टेबलाइज करना है, कोई कोएगुलेशन डेफिसिट्स हैं तो वो खत्म करने हैं, और हमने फीटस को देखना है कि डिलीवरी के लिए वो वायबल है कि नहीं, हमने उसको डिलीवर करना है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इसमें क्या है कि हमारे पास अगर पेशेंट के प्री एक्लेम्शिया के साथ उसको फिट्स डेवलप हो गए, कन्वर्जन हो गई, तो वो एक्लेम्शिया है। और एक्लेम्शिया के लिए कहते हैं कि हमारे पास पैथोजेनेसिस में क्या है, वेजोस्पैज्म है और सेलुलर एडीमा है। तो रेटिनल हेमोरेजेस, एक्सुडेट्स, पेपिलर एडीमा, दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी एंड दे आर रेयर इन प्री एक्लेम्शिया, suggesting that hypertension alone is not responsible for the cerebral पैथोलॉजी। अब देखिए हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे लोकल वाजोस्पैज्म हुआ किडनी का, तो क्या हुआ, हमारे पास ग्लोमेरुलोसिस था, ओलिगूरिया हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। प्रोटीन यूरिया का मतलब है ग्लोमेरुलर डैमेज है, आपके पास आपके रेटिना की सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो आपके पास ब्लड विजन है, फ्लैशिंग लाइट्स है, स्ट्रोमा है, लिवर की सप्लाई कम हो रही है, तो आपको मैंने भी बताया है कि इंजरी है, स्वेलिंग है, कैप्सूल स्ट्रेच करेगा, एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम को पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करेगी। अब आपके पास आता है मैनेजमेंट, हमने डिटेल हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे। हिस्ट्री में हमें पता चलेगा कि काफी सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो जो हाइपरटेंसिव के पीआईएच के रिस्क फैक्टर्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्री एक्लेम्शिया पुरानी प्रेगनेंसी में हो, या अगर पेशेंट की हिस्ट्री के मदर सिस्टर में पीआईएच की हिस्ट्री, तो 4 to 8 times फोल्ड इंक्रीज कर जाएगा। पहले बेबी में और अभी वाले बेबी में 10 से ज्यादा साल का, 10 या 10 से ज्यादा साल का वक्फा हो, पेशेंट की एज 40+ हो, उसका बीआई में 35 से ज्यादा हो, बुकिंग डायस्टोलिक उसका 80 हो, और ये ज्यादा हो, बुकिंग प्रोटीन यूरिया हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, सर्टेन मेडिकल कंडीशन जैसे कि रीनल डिजीज हो सकती है उसको, उसको हाइपरटेंशन ऑलरेडी हो सकता है, उसको ऑलरेडी वो डायबिटिक हो, उसको एसएलई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आ गए हैं इन्वेस्टिगेशन, अब हमें कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करने, हम सीटीजी करेंगे। हमें पता है कि पेशेंट का जो है फीटल हमने असेसमेंट करनी है, तो उसके लिए उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। और क्या करेंगे हम, प्लेसेंटा इंसफिशियंसी को रूल आउट कर, हमें पता है कि जब अर्ली ऑनसेट प्रीएक्लेम्शिया है तो उससे प्लेसेंटा इंसफिशियंसी हो सकती है, आईयूसीआर, एब्डक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फीटल डेथ। तो हमने सिंपली तो फंडल हाइट देखी, फीटल मूवमेंट का शो करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे फीटल ग्रोथ के लिए, एमनोटिक फ्लूइड के लिए, एम्बिलिकल आर्टरी, डॉपलर वेव फॉर्म के लिए, फुल ब्लड काउंट देखेंगे, पर्टिकुलर एम्फेसिस हमारा प्लेटलेट्स पे होगा और हेमाटोक्रिट पे होगा। प्लेटलेट वैल्यूज ठीक है तो हमें कोएगुलेशन प्रोफाइल कराने की जरूरत नहीं है, हमने आरएफटी एलएफटी कराया, सीरम यूरिक एसिड लेवल कराया और यूरिन फॉर प्रोटीन कराया। आपके पास अब आता है मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी विद प्री एक्लेम्शिया।
अगर तो हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट वाले लेवल हैं तो हम उसको एडमिट करेंगे और हम देखेंगे कोई क्लिनिकल कंसर्न्स हैं बेबी के, और मतलब अगर कोई क्लिनिकल कंसर्न्स हुए बेबी या मदर के या हाई रिस्क कंसर्न्स हुए तो हम उसको एडमिट कर लेंगे। और हमने उसको ट्रीटमेंट जो है ना, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तब लेना अगर बीपी 140/90 से ज्यादा रहता है। तो हमारे मैनेजमेंट हमारी कोशिश की होगी कि हम उसका 135/85 बीपी रखें और एटलीस्ट 48 आवर्स मॉनिटर करें। 48 आवर्स की बात करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट एडमिटेड है आपके पास तो आपसे मोर फ्रिक्वेंटली बीपी कर लें। और हमें डिस्ट्रिक्ट यूरिन प्रोटीन यूरिया टेस्टिंग तभी करने हैं क्लिनिकल इंडिकेटेड हो। और ब्लड टेस्ट है हमारे पास, फुल ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन, ये सब कुछ ट्वाइस अ वीक करेंगे। ट्वाइस अ वीक करते हैं। और अगर हमने क्या करना है, फिटल असेसमेंट, हमें फिटल हार्ट ऑस्कल्टेशन करनी है एवरी एंटीनेटल अपॉइंटमेंट। रिक्वायर्ड अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस हमने अल्ट्रासाउंड कर लिया, अगर नॉर्मल तो हम हर 2 हफ्ते बाद रिपीट करेंगे। और कैरी आउट सीटीजी डायग्नोसिस एंड देन ओनली इफ क्लिनिकली इंडिकेटेड। दूसरा हमारे पास था कि अगर आपके पास 160/90 वाला है, सिवियर हाइपरटेंशन, 160 वन टाइम वाला बीपी है, तो हम उसको एडमिट कर लेंगे। लेकिन अगर बीपी 160 110 से कम हो जाए तो हम मैनेज करेंगे फॉर हाइपरटेंशन। हमने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सब लोगों को देनी है, इसमें 135/85 हमारा टारगेट होगा। हमने यहाँ बीपी करना है जब तक हमारे पास 160 वन टाइम से बीपी कम नहीं, तो हमें 15 से 30 मिनट के वक्त से करते रहना है। लेकिन उसके बाद हम 4 टाइम्स डेली करेंगे डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिकल सर्कमस्टांसेस। ओनली रिपीट हमने डिस्ट्रिक्ट यूरिन तब करना है जब सिम्टम्स पता चले या हो रहे हैं। सीपीसी एलएफटी आरएफटी 3 टाइम्स अ वीक है। ये भी यही है कि अगर हमने इसका भी सेम है दूसरे हाइपरटेंशन से कि हमने फीटल हार्ट ऑस्कल्टेशन करनी है हर एंटीनेटल अपॉइंटमेंट पे, अल्ट्रासाउंड करना है डायग्नोसिस पे, और अगर नॉर्मल है तो रिपीट एवरी 2 वीक्स, और सीटीजी डायग्नोसिस पे, और अगर क्लिनिकल इंडिकेटर है तो करनी है। रूल ऑफ प्रोफाइलैक्सिस क्या है? एस्पिरिन हम देते हैं, ये क्या है? ये कॉक्स इनहिबिटर है और ये रिवर्स करेगा जो इम्बैलेंस है बिटवीन प्रोस्टासाइक्लिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन क्या करेगा? इट may reduce the parathyroid hormone release and intracellular calcium. Calcium is so leading to reduction in smooth muscle contractility. And fish oils, they are thought to inhibit the platelet thromboxane A2 and supplementation of antioxidants vitamin C and E, as we know that there is an oxidative stress in this patient. So now coming to the indication of delivery, what are the indications of imminent delivery? That if there is uncontrolled hypertension, there is deteriorating liver or function, liver or renal functional test, there is progressive fall in platelets and neurological complications, non-reactive CTG, fetal condition that is clearly deteriorating, absent or reverse diastolic flow. So for that we need to give a steroid cover. अगर 32 वीक से पहले तो हम steroid cover देंगे। और इंट्रापार्टम हम बीपी कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ, अच्छा, इससे पहले कि हमारे पास जो ज्यादा मिटरनल डेथ्स होती हैं इन प्री एक्लेम्पसिया वो होती हैं इंट्रासेल्युलर ब्लीड की वजह से और एक्यूट या एडल्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की वजह से। इसलिए हमें एक तो फ्लूइड बैलेंस भी इनको जो है ना फ्लूइड इनपुट आउटपुट बहुत अच्छे से बैलेंस करना होता है। ठीक है, हमने इसको ओवरलोड में नहीं डालना पेशेंट को। दूसरा ये कि हमने इसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। इंट्रासेल्युलर ब्लीड बहुत कॉमन कॉज है डेथ का। तो हमने क्या करना है कि मीन आरटीएल प्रेशर 125 से ज्यादा होगा तो हम उसको आईवी एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। अब मीन आरटीएल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं? ये होता है 2 इंटू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ओवर 3। नॉर्मली 70 to 1 टाइम तक होता है, लेकिन अगर 125 से ज्यादा हो जाए तो हमने उसको कंट्रोल करना है। लबिटोल हमारा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। दूसरा हमारे पास हाइड्रोलाजीन और तीसरा हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड नेफेडिपिन है। लिबिटोल हमने किस तरह दिया कि हमने 20 mg स्टैट दे दिया। अगर हमारे पास मैप है 125 से ज्यादा, फॉलोड बाय 10 मिनट इंटरवल, हम 40 80 के बोलस देंगे तब अप टू अ कम्युलेटिव डोज ऑफ 220। अगर मैप 125 से अब कम है, इन्फ्यूजन हम चला सकते हैं 40 mg/आवर पे, डबल कर सकते हैं 30 मिनट्स के इंटरवल पे अगर जरूरी हो, अंटिल सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स, या अगर हम 160 mg/आवर पर नहीं चले गए। लबीटोल इनफेक्टिव होती है अगर तो हाइड्रोलाजीन देंगे। अब हाइड्रोलाजीन हमने कैसे देना है? वो हमने 5 mg स्टैट देना है, फॉलोड बाय 5 mg की बोलसेस अप टू कम्युलेटिव ऑफ दी 15 mg। और इस तरह हम करके इसको 40 mg/आवर तक ले जाते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास जो हाइड्रोलाजीन का इंजेक्शन है वो 1 एम्प्यूल 1 ml है और उसमें 20 mg होते हैं। और जो लबीटोल है उसके वेरियस आते हैं, उसका 10 ml का भी एम्प्यूल आता है, उसके 1 ml के एम्प्यूल के भी 1 ml के भी 4 एम्प्यूल इकट्ठे आते हैं। उसके 1 एम्प्यूल के अंदर 5 mg होता है। ठीक है, तो उसका 10 ml वाला जो एक बड़ा एम्प्यूल आता है उसमें 50 mg होता है। अब आपके पास आ गया फ्लूइड मैनेजमेंट। ठीक है, अब फ्लूइड मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है, हमने बहुत ध्यान से फ्लूइड
आपको करना है देना पेशेंट को, क्योंकि women with preeclampsia they can have decreased intravascular volume. They usually have decreased intravascular volume. They have leaky capillary and they have decreased albumin level that is prone to pulmonary edema. So administration of IV fluid in response to oliguria must be performed with caution, and Foley should be inserted, balance should be recorded, and fluid intake limit होता है to approximately 1 ml per kg per hour. Now going to onto our next slide, anticonvulsant therapy. Magnesium sulfate up to 8 grams can be used to control an eclamptic fit, and diazepam can also be used 10 mg. All this with depressive properties हैं, they are little longer. अब जो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये अच्छा यूजुअली जो eclamptic fit है वो सेल्फ लिमिटेड होता है, और वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो हमने रूल आउट करना है, स्कैन करा के रूल आउट करना है, कोई अंदर और पैथोलॉजी तो नहीं है, इंट्रासेल्युलर ब्लीड तो नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट का बेनिफिट ओवर डायजेपम और फेनिटोइन ये है कि it is lower need of the maternal ventilation, less pneumonia, and fewer intensive care administration. It acts as a membrane stabilizer and vasodilator. It can be given as a loading dose of 4 gram IV and then as a maintenance of 1 gram per hour for 24 hours. But during giving the magnesium sulfate, you must be very concerned. You must check the patient throughout for the toxicity. Patient should be catheterized. Urine output should be monitored. If the urine output is less than 30 ml, it indicates toxicity, 30 ml per hour. And secondly, you need to check her tendon reflexes, especially the patellar reflex. Then they can be suspected depression, partial paralysis, and cardiac arrest. So the antidote of the magnesium sulfate is actually calcium gluconate. 10 ml of 10% of calcium gluconate can be given. It has reduced the magnesium sulfate has reduced the risk of preeclampsia and the risk of maternal death to half, and also decreased the risk of cerebral palsy in the premature delivery. So coming on to the anesthesia, the GA with ETT is actually it can cause severe hypertension. So renal blockade is actually preferred, and but for that coagulopathy must be excluded, and care must be taken to avoid the arterial hypotension, particularly after PPH in view of vasoconstriction and decreased intravascular volume. Now, as you know that 1/3 of the the eclamptic fits occur 48 hours after delivery, so intensive monitoring is required even after delivery. And although eclampsia has been reported beyond this time, but it is unlikely to be associated with any serious morbidity. Blood pressure is frequent at हाईएस्ट होगा 3 to 4 days आफ्टर डिलीवरी। तो एंटी हाइपरटेंसिव हम घर के लिए सजेस्ट करते हैं। पेशेंट को हम कहेंगे कि हॉस्पिटल पे रिव्यू कराए 6 to 8 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। इन एडिशन टू ब्लड प्रेशर, यूरिन टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ रीनल फंक्शन और लिवर फंक्शन हमने जरूर करवाने हैं। और अगर हमें लगे कि ये डिटोरेट कर रहे हैं तो हम रेफर करेंगे फिजिशियन को। दूसरा ये कि पेशेंट को फ्यूचर कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के बहुत चांसेस हैं। प्रीएक्लेम्पशिया है तो 4 रिस्क हाइपरटेंशन के डेवलप होने के चांसेस हैं, और 2-fold इंक्रीज रिस्क है इस्केमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, इवन अप टू 14 ईयर्स आफ्टर प्रेगनेंसी। और जिनको अर्ली प्रीएक्लेम्पशिया उनको ज्यादा रिस्क है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि अर्ली इट्स एक्चुअली early cardiovascular risk assessment करा सकते हैं, income assessment of preventive therapies in earlier age,